अब बात करते हैं फादर वूंड्स की ऑन रिक्वेस्ट. सो लॉट ऑफ बॉयज़, लॉट ऑफ मेल्स वुड से कि पापा बहुत बिजी रहते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं. इफ़ आई वुड गो टू हिम तो वो इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे वोंट एक्सप्रेस बट दे थिंक कि वो क्या कभी समझेंगे नहीं समझेंगे. So a lot of men who come to me for their healing, my first step with them is to reconnect them to their father. Because if you want to be the provider and be a strong, masculine is a strong container till they've not connected. So when I tell them, we'll do a session with your father, डर जाते हैं, वो आएंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं. I said, have you ever gone and hugged your father? No. Like touch कहाँ पे होता है ना? You won't believe it, Divas. And I'm talking about men 50, 60, really well established, doing great in business, right? And when their fathers are sitting on the table and when they hug, you must see that moment when they are crying, and right after that one session, their entire life changes. Yeah. Their entire premise of their life was that one touch on their head saying, "Beta, मैं तेरे साथ हूँ." That is such a shaking moment, I can't tell you. बट जब मैं बोलती हूँ इनको, इनिशिएट करती हूँ, डर जाते हैं, नहीं पापा नहीं आएंगे, पापा आ ही नहीं सकते, वो बोलेंगे मैं पागल हो गया. ऐसे बोलने दो, जो बोलेंगे आप उनको उठा के ले आओ बस. सो येस, दिस अ वेरी बिग गैप, बट आई थिंक इट्स नीडेड. दैट वन हग, दैट वन अप्रूवल फ्रॉम योर फादर, ही कमिंग एंड देन फिर मैं उनको होमवर्क देती हूँ दैट आज के बाद रोज सुबह उठ के ना आप एक दूसरे के आंखों में देखे आई लव यू बोलोगे और हग करोगे, एंड दे स्टार्ट डूइंग इट, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, मैजिकली their money reality starts moving, they start improving as a person. Because your roots create your fruits, and your father is your root. Where did your seed come out from? From your father's body. And you are not connected to that individual. How can you expect results in life? So I think it's really, really important to reconnect back to your roots if you want good fruits. I have known males in my life who have said कि पापा ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसको देख उसने क्या अचीव कर लिया. नाउ दैट पर्सन इज़ वुंडेड एंड ही फील्स कि पापा ने मुझे कभी समझा ही नहीं. ही जस्ट कंपेयर्ड मी विद द टेम्पलेट विद द शर्मा जी का बेटा, एंड दैट मैन लिव्ड ऑल हिज लाइफ फीलिंग कि आई वाज़न्ट वैल्यूड. See, actually, you know what? Healing हम खुद नहीं कर सकते हैं. I always see Sachin Tendulkar is Sachin Tendulkar because he has a coach. I always recommend get someone on board for your healing. So if this person went on board with somebody for a healing, the first 2-3 sessions, so because when I take anybody for healing, it's not less than 10 sessions. They tell me हमको एक session दे दो, I'm like no, don't come to me. In one session I can't give you anything. बिल्कुल. So 10 session mandate है. So first 3 sessions, if I had to take up this client, I would first bring down his anger, bring down his, re-establish his connection with his father in his heart, that your father loved you. Because you know what, बच्चे को ये जो याद रह गया कि पापा ने शर्मा जी के बेटे से कंपेयर किया, बच्चा ये भूल गया कि कितने तकलीफ से फादर ने पैसा कमा के तुमको ब्रिंग अप किया. ये भूल गया ना बच्चा. बच्चे को तो डस्टबिन पे तो नहीं फेंक दिया ना. Right? We forget all the good things our parents did. 2 बातें गलत हुई. So I take a pen and paper and make them write down. यहाँ पे अच्छा लिखो और बुरा लिखो. You won't believe it. बुरे में ना 2 चीज़ों से ज़्यादा आता ही नहीं है. अच्छे में पेज भर जाते हैं. It is like the missing tile syndrome ना. एक टाइल मिसिंग है, आप उसी पे पूरी जिंदगी फोकस कर रहे हो. So I then empower them with responsibility that your father said it because he wanted to motivate you. Now you need to take responsibility and heal it. And then in the 3rd, 4th session, then you bring the father on board. And so it's a journey. It's not like एकदम से उठ के तुम जाके जप्फी डाल दो. Impossible है. Steps हैं. One man says कि जब पापा बहुत aggressive थे ना, तो उन्होंने बहुत मारा, like बेल्ट से मारा, like लातों से मारा, and I just hate him because he was too aggressive. So it's really important to understand. See, इस क्लास में इस वक्त क्या है? पानी, right? Optimist and pessimist वाला. No. I'm not asking कितना पानी. What is inside this glass? हाँ, पानी है, पानी हवा है भी ना? है. हाँ. अब ये ग्लास जहाँ पे भी जाएगा, जी. क्या देगा? पानी. क्यों? उसमें पानी है. राइट? कॉफ़ी नहीं दे सकता, चाय नहीं दे सकता. बिल्कुल.
उसके फादर के अंदर जो था ना उसने वही दिया. Now for a moment rewind back and go back to the father's childhood. He would have been beaten up. And he only knew that. That's the only love language. Yeah. Our brain is very innocent when we are small. So whatever is given to us, we feel this is our connection with our father. Loving my father means being beaten. That becomes like the love language. Right? And abuse becomes the language. And that became his language. And उनको लगता ही था 4 थप्पड़ मारो तभी ठीक होगा. तब ठीक होगा. But they never ever realized that ये trauma है. सच बताएं, अगर आज की डेट में इतना, we are living right now in a world of information, we are well educated. If we were not, we would have done the same. Right? And here we have nothing. Is it wrong? 200% it's wrong. But now he needs to move beyond it.